ओके सो एज प्रॉमिस्ड अल्टरनेट डेज वीडियोस बोले थे मैंने, आज फिर से नया वीडियो डाल रहा हूँ। टुडेज़ वीडियो विल बी अबाउट बेसिक एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग, एंड ये मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट वीडियो में आई हैव गिवन यू वार्म अप एक्सरसाइजेज, एंड इसमें हम कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। सो स्ट्रेचिंग करना मत भूलना और वार्म अप करना भी मत भूलना। फर्स्ट वार्म अप, देन एक्सरसाइज, देन स्ट्रेचिंग, एंड आफ्टर द एक्सरसाइजेज आर डन आई विल टेल यू समथिंग more about your diet, your intake, and all those things. As I said, I'll tell you about the app. The app is called Healthify. So if you already know about it, आप यूज़ करना शुरू कर सकते हो. If you don't know about it, I'll tell you at the end of the video. सो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली एक्सरसाइज विच इज़ जंपिंग जैक्स। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट यू हैव टू मूव योर फीट apart, more than shoulder width apart, and hands up with it. So you're going to do this together, okay? And then come down with the feet close and hands down. So hands up and feet apart, hands down and feet down. That's what you're going to do. So इसको हम 25 repetitions into 3 sets करेंगे. That is first exercise that you will do, jumping jacks, okay? So the next one that we will look at is lunges. So forward lunges, these are called forward lunges because you are putting your foot forward. पैर आप आगे रख रहे हो, and then you are bending it from the knee so that it goes down and the pressure will come on the whole leg, majorly on the quads and the hamstring. Okay, so इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है. आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बैलेंस इधर उधर हो जाता है, but as you do and practice it more, you will get that balance and then you can add weights. Okay, the next one is the famous, you can call it dips, you can call it push-ups, whatever you want, but you have to keep your hands more than shoulder width apart. You can measure it by the fingers, जैसे मैंने measure किया, हाथ से measure किया है. So but you have to make sure that while you're going down, your chest is touching the ground, not your whole body, not the legs, but only the chest. साइड से एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है, so that you know कि क्या part नीचे जा रहा है. So you have to keep your legs and hips up and only the chest goes down to touch the ground, right? And make sure that your hands are moving behind and not sideways to the shoulders. Okay, so if push-ups on the ground is very difficult for you, you can do the same thing on the wall, right? So I'll show you how to do it on the wall from the side angle. So you keep your body a little bit away from the wall and lean on the wall with your hands straight to the wall. शोल्डर के आसपास ही रखना है हाइट, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए हाथ. एंड देन यू डू द सेम मोशन दैट यू वर डूइंग ऑन द ग्राउंड, बट यू आर नॉट एबल टू डू डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. तो उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल पे पुशअप्स कर रहे हैं, सो दैट आवर पुश स्ट्रेंथ इंक्रीजेज लिटिल बाय लिटिल. If that is easy for you, the wall push-ups, then you can do inclined push-ups, which is on a bed or a sofa. Bed या sofa पे inclined push-ups कर सकते हैं. If ground one is too difficult and the wall one is too easy for you, so this is something in between, right? So you lean on the sofa same way that you lean on the wall, and you do the push-ups the same way, touching your chest to the sofa, right? So all these exercises, if you're doing the wall push-up or the sofa push-up, you will do 50 repetitions in one set and keep increasing it till you reach the 3 sets, and then you will be able to do the ground push-ups easily. So that's how you do the sofa push-up. The next exercise we are doing is again for the legs, so that is called squats, and you will be doing it by putting your legs shoulder width apart approximately and going down like this without moving the knees much. So जैसे हम उठक बैठक करते हैं वैसे knees आगे नहीं आने चाहिए, जितना हो सकता है knees जगह पे रहेंगे, and we will go down by putting our hips down. मे बी स्टार्टिंग में एकदम से पूरे डिप्स नहीं जा पाएंगे, पूरे नीचे नहीं जा पाएंगे हिप्स. सो यू कैन गो एज मच एज यू कैन एंड स्लोली यू विल इंक्रीज. समटाइम्स बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे होता है, सो इफ़ यू हैव दैट प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली, यू कैन पुट समथिंग अंडर योर हील्स so that your heels are a little up, and then you can easily do the squats. Okay, so now let's talk about warm up exercises. basic कुछ हो गई हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा मसल्स पे. बट विल टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग. नहीं, ये वाला स्ट्रेचिंग नहीं, सो के उठने वाला आलसी वाला स्ट्रेचिंग नहीं. विल टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स.
So first is this stretch, which is put your hands behind your head and stretch with your elbow using the other hand. दूसरे हाथ से आपके elbow को खींच के दूसरी तरफ opposite side खींचना है so that your shoulders get stretched. Okay, so this is one of the stretchings. Then next one will be your hand stretches. So इसको आप एक हाथ अपने opposite side ले जाएंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ. So one you will pull in the direction of the hand that is on the right or the left, and one you will pull up. एक हाथ से आप ऊपर खींच रहे हैं और एक हाथ से लेफ्ट या राइट खींच रहे हैं. So the hand which is horizontal goes in the left or right direction depending upon which hand. और इसके बाद फिर ये वाला stretch है. So put your hands straight, put your palms straight and pull it up and down in both directions. एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ खींचना है. जितने भी स्ट्रेचेस हम कर रहे हैं मिनिमम 5 seconds, एंड एज यू गेट यूज टू इट 10 seconds up to 10 seconds you can do it, right? So this is for the hands. So you're done with the torso portion. Now you can do with the legs. So pull your legs towards the back as much as possible. This will pull your quads muscle. So this will give a good stretch to your quads muscle, right? So एक हाथ से पैर ऐसे पकड़ के पूरा पीछे की तरफ खींचना है जितना हो सकता है उतना. ओके, देन यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ एनीथिंग इफ़ यू नीड, बट इफ़ सपोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बैलेंस अच्छा है तो इस तरीके से घुटने को ऊपर की तरफ खींचना है. दिस विल स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स. ओके, सो हैमस्ट्रिंग्स के स्ट्रेच के लिए दिस इज़ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. पुल योर नीज अप एज मच एज पॉसिबल टूवर्ड्स योर चेस्ट. ओके, then the next one is for your glutes, or you can say the hip area. So इस तरीके से पैर को पकड़ के from the ankle and the knee you have to stretch for your hips. So if you've done squats you will need this stretch very much. Okay, so these are the stretching exercises. Now let's look other stretching exercises. Okay, so the next one is for your shoulders and chest, right? So इसके लिए आपको हाथ कोई भी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से आपका हाथ वहीं पे रहे, अटका रहे और आप आपके चेस्ट को और शोल्डर्स को आगे खींच सको, राइट? सो दिस इज़ फ्रॉम द बैक एंगल, यू कैन सी हाउ इट इज़ गोइंग, एंड दिस इज़ फ्रॉम द फ्रंट एंगल. सो हाथ आपने रख लिया वहाँ पे और इसके बाद स्ट्रेच किया, पुल किया आगे की तरफ. सो यू गेट अ गुड स्ट्रेच ऑन योर शोल्डर्स एंड चेस्ट लाइक दिस, राइट? नेक्स्ट वन अप इज़ द काफ्स. ओके, सो काफ के स्ट्रेचिंग के लिए ऐसा कोई भी वर्टिकल सरफेस ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप आपके पैर को ऐसे टिका सकते हैं, राइट? एंड देन वंस यू टच इट लाइक दिस, मूव योर बॉडी फॉरवर्ड और मूव योर लेग्स फॉरवर्ड, सो यू गेट अ गुड स्ट्रेच ऑन द काफ. इससे आपको काफ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. सो जैसे ही आप ये रखते हैं पैर, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है. मूव योर बॉडी फॉरवर्ड सो योर काफ गेट स्ट्रेच्ड. Right, these are all the stretching exercises that you can perform. Okay, so we are done with exercise, we are done with stretching. Now let's talk about the app. So Healthify Me, ये नाम है ऐप का. I will put the link in the description. You can also search it on Play Store. Once you download the app, आपको वो सब basic information पूछेगा, आपका age, height, weight and what is your goal, कितना आपको करना है वेट. सो कितने तक पहुंचाना है आपको, गोल वेट कितना है और कितने दिनों में पहुंचाना है. सो इट विल गिव यू अकॉर्डिंग टू दैट विल गिव यू डिफरेंट स्लॉट्स कि आपको कितना एक वीक में कम करना है वेट, एंड यू कैन सिलेक्ट दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल गिव यू द टाइम स्पैन कि आपको इतना टाइम लगेगा इतना वेट कम करने के लिए. ओके, सो यू कैन पुट वीकली 0.5 kgs, that is 500 grams. You can put weekly 0.75, weekly 1 kg. So depending upon how much you can do it, you can put the target, okay, for week. Now talking about the app itself, it is very good app to track the nutrients and the calorie content of all the food that you are consuming. Let's say for example हमको रोटी का चेक करना है कि कैलोरीज कितना है. So I just put one, roti, and if I put one roti, it will give me how much calories are there in one roti. That is your normal आटा रोटी. ठीक है, मैं मल्टीग्रेन या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रागी वगैरह की नहीं, just normal roti. So I'm taking it as an example. So in that it will give you the number of calories, it will give you the fiber content, protein content, fat content and carbohydrate content, right? So all these things, now when you start tracking you will understand कि आपका कभी कभी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है नॉर्मल खाने में, कभी फैट्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, प्रोटीन्स मे बी फॉलिंग शॉर्ट, fiber may be falling short. That is a common thing.
in whatever we eat normally, right? Mostly ऐसा होता है कि fiber content complete नहीं हो पाता, protein complete नहीं हो पाता, and fat and carbohydrates is high, and that is the reason why fat percentage in your body is high. Okay, so what you have to do is slowly make changes. ठीक है, तो धीरे धीरे आपके डाइट में चेंजेस करेंगे. जैसे मैंने किया था, सबसे पहले मैं I was eating 4 rotis for lunch, normal rotis, atta roti. I changed it to multigrain roti. So the carbs came down, the fats came down, the fiber increased, and the protein increased. Right? So that is how you make small changes in the diet. So इसके बाद सबसे पहला चेंज मैंने ये किया था कि मैंने ऑयल ड्रॉप कर दिया था. So started boiled vegetables, completely cut down on fat mostly. दाल में फिर भी घी खाता था मैं. So slowly I cut down that as well. घी पहले दाल में 3 चम्मच खाता था मैं, 3 tablespoons, not teaspoons. Okay, so I cut that down from 3 to 2, 2 to 1, and 1 to none. Okay, so ये धीरे धीरे ऐसे चेंजेस करते जाने हैं, and don't do all these changes all together. एक साथ जब आप चेंजेस करोगे, you will see a lot of drop in your energy level, right? So if you do sudden changes to your body in terms of exercise, in terms of diet, you will see a sudden loss of energy. That should not happen. सो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ग्रेजुअली चेंजेस करो, धीरे धीरे चेंजेस करो, नॉट ऑल टुगेदर सडनली. एंड वंस यू कीप डूइंग दोज चेंजेस, यू विल सी द रिजल्ट. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट. ओके, बिकॉज जैसे जैसे ये चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ते जाता है और डाइट में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज कम होते जाता है टू द लेवल दैट यू कैन सस्टेन, उसके बाद आपको डेफिनेटली वेट लॉस दिखेगा, फैट लॉस भी दिखेगा. सो follow the app. I will do one thing. I'll make a separate video for the app, how to use the app, because ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में आपको ऐप दिखाऊंगा तो. So maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, I will give you a video of Healthify app, how to use it, how to track food items that you are eating throughout the day. But if you do cheating in that, it's of no use, right? So even if you eat 1 tablespoon of anything that contains oil, ghee, anything fatty or sugary, then you should track it. अगर आपने एक चॉकलेट का पीस भी खाया है इतना सा, so 1 Cadbury square, even that can be tracked in that. So make sure you track it. As you track it, you know what to cut down, what not to cut down. So we'll talk about the app in the next video. See you in the next video.